Right. Are we live? Guys, mic testing. Google, Amazon, Facebook. Can you guys hear me? Let me check. Um, Welcome to the stream. First of all, Google Summer of Code के बारे में बातें कर रहे हैं आज. Okay. If you can hear me, please type in yes. All right, we're good. Acha, and please let me know if there's anyone who does not understand Hindi because I'm feeling like Hindi में करते हैं. But it's going to be fun. Like previous few webinars have been too formal, if you can put it that way. So let's do this one in Hindi. Is that okay? किसी को कोई भी ऐसा बंदा है जिसको हिंदी नहीं आती, कोई इंडिया से बाहर का, then please let me know. तो हम इंग्लिश में स्विच कर लेंगे. Alright. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. आज हम बात कर रहे हैं श्योर ब्रो हिंदी में. ओके ब्रो, चलो तो यार आज हम बात कर रहे हैं गूगल समर ऑफ कोड के बारे में. ये क्या होता है एंड व्हाट इज द प्रोसीजर, कैसे क्या करते हैं, अप्लाई कैसे करते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस, प्रपोजल राइटिंग एंड एवरीथिंग अबाउट इट. ठीक है, और ओपन सोर्स क्या होता है, तो ये सब हम बातें करेंगे. एंड देन लास्ट में वही क्वेश्चंस लेंगे. ठीक है, एंड बेसिकली इट्स अ वेरी चिल वेबिनार. तो बैठे रहो, बने रहो, बाद में देख लेंगे नेटफ्लिक्स वगैरह, थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, काम की बातें करते हैं. एंड एंड में कोई भी क्वेश्चन पूछ लेना. आई गॉट अ लॉट ऑफ मैसेजेस अबाउट लिंक्डइन लास्ट वीडियो के बाद. तो लिंक्डइन से रिलेटेड या कोई भी क्वेश्चन हो, जस्ट आस्क मी एट द एंड. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. लेट मी टेल यू अ बिट अबाउट माई सेल्फ इफ यू आर न्यू. हाय, माई नेम इज अभिषेक संसनवाल and I'm founder and CEO of Verved, which is a tech firm, and I'm a TEDx speaker, and I won the award of top 50 tech leaders at InterCon last year in Dubai, and I'm one of the 6 Google Venkat scholars in last year's edition, and I worked in Google Summer of Code with Amahi in 2019, and I invest in early stage companies, plus I make YouTube videos and stuff like that. ठीक है, so that's about me. Now let's continue Hindi में. Dude, is that okay? Like, if you want, then I can switch back to English. That's cool with me. Let me know, okay? Let me know if you have any issues, but let's continue. All right, so Google Summer of Code क्या होता है? Let's begin. And as I said, if you are not in my WhatsApp group, I have a WhatsApp group where I give all the notifications and updates about these videos and stuff. So there I said कि I haven't made any PPT. My goodness, my light is flickering. Okay, so I didn't make any PPT, so we're using GSoC's official presentation. ठीक है, उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है पब्लिकली, तो ये यूज करते हैं. तो लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. तो गूगल समर ऑफ कोड में सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट गूगल समर ऑफ कोड इज ऑल अबाउट. इट्स अबाउट ओपन सोर्स. ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन कम्स, ओपन सोर्स क्या होता है. तो ओपन सोर्स के लिए पढ़ लो, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बेसिकली. And actually, it's not a software, it is not a program. You'll find a lot of definitions that will say कि एक program होता है, एक software होता है. Open source का जो true essence है ना, वो है basically a whole process. Process of what? वो देखते हैं. तो computer software where the source code is distributed under an open source license that allows anyone to study, change, improve and distribute the software. ठीक है? And it promotes collaboration, and it's basically, it revolves around a community of dedicated developers. तो बेसिकली आज जो ये पूरा प्रोसेस है ऑफ दिस सॉफ्टवेयर बीइंग पब्लिकली अवेलेबल, पीपल कोलैबोरेटिंग, तो इस पूरे प्रोसेस को एक तरीके से ओपन सोर्स बोलते हैं. ठीक है, इफ यू सॉ माय प्रोगेट वेबिनार ऑन ओपन सोर्स, देन यू आर फेमिलियर विद दिस. ओपन सोर्स क्या है, क्लोज सोर्स क्या है, फ्री सोर्स क्या है, फ्री एंड ओपन सोर्स क्या है. तो वॉच दैट वेबिनार, बट आज के लिए इतना काफी है. ठीक है, इट्स बेसिकली सोर्स कोड पब्लिकली अवेलेबल है, एनीवन कैन मॉडिफाई इट, यूज इट, इम्प्रूव इट एंड डू व्हाटएवर दे वांट. Also distributed, but also distributed within the license terms. तो इसलिए definition थोड़ी सी not 100% है, but that's all right. जितना समझना है उतना काफी है. Okay, so this is open source. अब next हम बात करते हैं GSoC क्या है. All right, it's very short presentation. I guess 3-4-5 slides और हैं. So जैसे ही ये slides हम cover कर लेंगे, इसके बाद we'll switch to GSoC website. Then I'll show you the website and we'll hang out there. Okay, so GSoC क्या है? Google Summer of Code or GSoC. It's an online international program which revolves around open source. Okay, and it's basically to encourage the participation of students in the open source world. That's it. Google Summer Code 3 महीने का एक प्रोग्राम होता है. उसमें स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट्स, ग्रेजुएट या अंडरग्रेड
जो कर रहे हैं, they can participate and work on open source projects and they get a good amount of money, you know, as a stipend. तो दैट्स GSoC एंड अभी हम उसकी वेबसाइट देखेंगे थोड़ी देर में एंड ऑल द लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन अगर आपको बाद में चेकआउट करनी है. ओके एंड ऑल्सो ओके आई फॉरगॉट this webinar, we are collaborating with Cybermeet Society, IPCW. उनकी link भी it's in the description, so go check it out. They're pretty cool. All the links are in the description. There, I guess the person that's organizing this could not be with us because of network issues. But all right, let's continue. तो यार स्टूडेंट्स क्या करते हैं इस GSoC में? They work on an open source software with an open source organization and they earn a stipend if they successfully pass all the evaluations. ठीक है, we'll talk about क्या exact procedure होता है, structure होता है प्रोग्राम का, but there are 3 evaluations. तो हर एक इवेल्युएशन को जब आप क्रॉस करते हैं, पास करते हैं, तब गूगल आपको कुछ परसेंटेज ऑफ मनी सेंड करता है, राइट? एंड देन जब आप तीनों सक्सेसफुली पास कर लेते हो इवेल्युएशन, देन गूगल सेंड्स यू द सर्टिफिकेट एंड द स्टाइपेंड दैट्स लेफ्ट. What's happened to my voice? Okay, next sorry guys. University students spend their time outside of school working blah blah, अंग्रेजी की और थोड़े वर्ड्स एंड सेंटेंसेस, बट बेसिकली यही होता है. ठीक है, स्टूडेंट्स के एग्जाम चल रहे हैं या फिर जो भी हो रहा है उसके साथ साथ फॉर 3 months दे कैन वर्क इन गूगल समर ऑफ कोड एंड द रिक्वायरमेंट इज नॉट टू हेक्टिक. लाइक 40-40 hours इज द टाइम दैट दे एक्सपेक्ट यू टू वर्क, आई बिलीव. बट जनरली लोग इससे कम ही काम करते हैं. जब इवेल्युएशन आ रहा होता है पास, देन दे ट्राई टू फिनिश ऑल द वर्क जनरली. आई मीन मैंने तो ये किया था. ओके, नेक्स्ट इज गोल ऑफ द प्रोग्राम. तो अभी है क्यों यार गूगल समर कोड? आई मीन गूगल का क्या फ़ायदा हो रहा है, राइट? ऑर्गेनाइजेशंस का क्या फ़ायदा हो रहा है? वो पैसे दे रहे हैं एंड बच्चे जो हैं वो काम कर रहे हैं उनके प्रोजेक्ट पे. तो इसका यार बेसिकली मेन, एज यू नो कि ओपन सोर्स जो डेवलपमेंट है, पूरी प्रोसेस, द ओपन सोर्स वर्ल्ड, it's all about doing this good thing where developers can see the source code and collaborate. इसमें कोई incentive वगैरह नहीं होता, and that's also one of the reasons why कुछ लोगों को open source इतना पसंद नहीं आता, right? There's no incentive, but Google ने प्रोग्राम स्टार्ट किया था to motivate students and उसके बदले में Google पैसे देता है, so incentive वाली वैल्यू आ गई. And this is the reason why hundreds and hundreds of students from India participate in GSoC every year. I mean, पैसा अच्छा मिल रहा है तो क्यों नहीं, राइट? देन provide students in computer science and blah blah the opportunity to do work related to their academic. I don't know, फालतू लाइन है. बेसिकली जो प्रोजेक्ट होता है उस पर वर्क करते हैं and it's hardly related to the academics. And give students exposure to real world software development. Yes, this is right. So open source में you see, you collaborate with people in you work for an open source organization एंड उसमें यार काफ़ी कुछ सीखते हो तुम, राइट? आई ऑलवेज से दिस कि जो वो 3 महीने थे GSoC के, उनमें जो मैंने सीखा दैट वाज मोर देन जो मैंने 1 साल पहले या 1 साल बाद में सीखा है मिला के. सो देयर इज सो मच दैट यू लर्न बिकॉज इट्स अ चैलेंजिंग थिंग. ओके, वर्किंग ऑन एन ओपन सोर्स प्रोजेक्ट इट्स नॉट ईजी, क्योंकि काफ़ी टाइम यूल सी इट्स ओवरवेलमिंग बिकॉज कोड काफ़ी अलग अलग कंट्रीज से लोग वर्क कर रहे हैं, तो काफ़ी कभी कभी कॉम्प्लेक्स सा लगता है वो दिखने में. बट विल सी कैसे उसको ब्रेक डाउन करना है, कैसे क्या करना है. एंड आई डू हैव, इफ यू आर न्यू टू द चैनल, आई डू हैव सम वीडियोज ऑन GSoC. 4-5 वीडियो बनाई है एंड दे आर सुपर कूल. तो उनको बाद में चेकआउट कर लेना अगर और सही से कुछ समझना है, रिवाइज करना है जो भी आज बातें कर रहे हैं. ओके, नेक्स्ट इज help open source projects, bring in new developers. Again, let's move on. So how does GSoC work? The main question, कैसे काम करता है? So see, the first thing is जो students, जो mentor organizations हैं, mentor organizations यानी कि जो organizations participate करें in Google Summer of Code for the students to work with them, right? तो वो जो organization है, they are called mentor organization. So they apply to be mentor organizations. Then Google choose करता है कुछ organizations को. 2019 में Google selected 206 organizations, right? And then उन organizations के लिए students proposal submit करते हैं to work with those organizations. This is the rough idea of how GSoC works. जैसे ही presentation खत्म होती है, we will go and check out the GSoC website. तो उसमें पूरा timeline हम देखेंगे कैसे, कब और क्या होता है, right? बट इस साइड के लिए इतना ही.
नेक्स्ट इज सो स्टूडेंट्स ने अप्लाई कर दिया. अब मेंटर ऑर्गेनाइजेशन चूज करती है स्टूडेंट्स दैट दे वुड लाइक टू एक्सेप्ट, राइट. दो एंड डिसीजन इज इन द हैंड्स ऑफ गूगल, बिकॉज लेट्स से एक स्टूडेंट का दो ऑर्गेनाइजेशन में हो गया, राइट. तो गूगल देखता है कितने स्लॉट्स किस ऑर्गेनाइजेशन को हैं एंड अकॉर्डिंगली सेलेक्ट होते हैं स्टूडेंट्स. But obviously, if you get selected by the mentor, there are 98% chances that you will get selected in Google Summer of Code. So next is जब select हो जाता है mentor किसी student को accept करते हैं proposal को, तब उन्हें एक coding period होता है. उस period में they basically interact and get to know more about the organization, ठीक है. And then the coding begins. अब 3 महीने तक उन्होंने पूरा अपना अच्छे से जी जान लगा के गूगल समर ऑफ कोड का जो प्रोजेक्ट है उस पर कोडिंग करनी होता है, कंट्रीब्यूट करना होता है. जो भी उन्होंने प्रपोज किया है प्रपोजल में, दैट ऑल दोज थिंग्स दे हैव टू वर्क ऑन देम नाउ, ठीक है. एंड देन आफ्टर दैट द रिजल्ट्स आर अनाउंस्ड. या इवैल्यूएशंस, एज आई सेड देयर आर 3 इवैल्यूएशंस, एंड अगर आपको GSoC सक्सेसफुली कंप्लीट करना है देन यू मस्ट पास ऑल दीज 3 इवैल्यूएशंस सक्सेसफुली, ओके. तो अगेन जो स्टूडेंट पास करता है दे आर पेड अ स्टाइपेंड फॉर देयर वर्क. सो लेट्स से व्हेन यू फिनिश द फर्स्ट इवैल्यूएशन, गूगल विल सेंड यू आई गेस 60,000 रुपीज. आई एम टॉकिंग फ्रॉम इंडियाज परस्पेक्टिव, लाइक दूसरी कंट्रीज में थोड़ा ज़्यादा होता है, किसी में थोड़ा कम होता है. बट लास्ट ईयर 2019 में वॉज लाइक दिस. सो फर्स्ट इवैल्यूएशन पास करने के बाद गूगल सेंड्स यू 60K, एंड देन सेकेंड इवैल्यूएशन 1 महीने बाद होती है, उसको पास करने के बाद गूगल सेंड्स यू 60K, एंड देन थर्ड एंड द फाइनल इवैल्यूएशन उसके 1 महीने बाद होती है, एंड देन गूगल सेंड्स यू 80K प्लस द सर्टिफिकेट, right? So this is the basic stuff. And at the conclusion of GSoC, students submit the code they've written for their project for everyone to see and use. Yeah, so final evaluation, there is third evaluation में student को एक report बनानी होती है about all the contributions that they've made, okay, all the work that they've done in GSoC, and then वो mentors वगैरह review करते हैं end में, and it's publicly available for anyone and everyone to see. If you go to GSoC website online, you can see everyone's projects report. अगर आप आर्काइव में जाओ, ऑर्गेनाइजेशंस में जाओ, वो भी देखेंगे भी थोड़ी देर में. Then you can see my project report कि मैंने क्या काम किया था. Right, I'll show you that. If I do forget, just remind me. All right, next is eligibility क्या होती है. This is also important because काफ़ी लोगों को पता ही नहीं होता GSoC can be even participate in GSoC. So again, you have to be over 18 at the time of registration. $3,000 this time. Wow, that's cool. इसी साल करना चाहिए था फिर तो मुझे भी. Just kidding. Yeah, and you have to be enrolled in a university program at the time of student acceptance. यानी कि जब आपका GSoC में selection हुआ है उस time पे you have to be a student. तो people ask कि अगर हम 4th year में हैं, can we participate? Yes, you can if your date of graduation is after the GSoC's acceptance date. तो उस चीज़ का ध्यान रखो. You can participate. And if you're doing bachelor's, you're doing master's, it doesn't matter. If you're a student anywhere in the world, obviously there are some countries that the US does not allow them to participate in Google Summer of Code and such programs. But you're from India, most of you, so you guys can participate. No problem. And also you have to be eligible to work in the country in which you reside, right? So obviously Google won't sponsor you visas and stuff for GSoC. So you have to be eligible to work in the country that you're residing in currently. And then have participated in no more than one previous GSoC. इसकी जगह गूगल ने सीधा लिखना चाहिए 2 बार से ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, right? So like I have participated once in GSoC, I can participate only one time, and that's it. Even though I won't because I'm done with GSoC, it was good, now it's in the past. But yes, you can participate 2 times, 2 बारी कर लिया, then you cannot. इसको ध्यान रखो, काफ़ी लोगों को ये डाउट रहता है कितनी बारी पार्टिसिपेट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज स्टेटिस्टिक्स. ये तो कभी इंटरेस्टिंग. हाँ, इसमें एक चीज़ इंटरेस्टिंग है, एंड दैट इज इंडिया से सबसे ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करते हैं. एंड ऑब्वियसली यू कैन गेस व्हाट द रीज़न इज. द रीज़न इज द $2,000-3,000 चेक. पैसे अच्छे खासे मिल रहे हैं. प्लस ऑल्सो GSoC के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. Like I remember जब मैं GSoC में हुआ था, I started getting so many opportunities. GSoC के बाद my mentor was like, hey, I have a startup, do you want to come work with us as an iOS developer? So काफ़ी opportunities मिलती हैं. LinkedIn पे काफ़ी messages आते हैं, and it basically opens a lot of doors. In fact, resume पे भी if an employer sees कि हाँ इस बंदे ने GSoC किया है, program hosted by Google, then उसका बहुत ज़्यादा impact पड़ता है. Plus you get a Google referral, plus
It's amazing. Also, if you know me, then you know I'm one of the 6 scholars of Google Venkat scholarship of last edition 1920 cohort. तो उसमें भी यार देवर लाइक आई बिलीव हर साल एक दो लोग होते हैं जिन्होंने जीसॉक किया होता है, तो उसका भी आई बिलीव कहीं ना कहीं कुछ इम्पैक्ट होता है. लाइक इफ यू आर अ जी सॉकर देन इन अ वे दे विल सी यू डिफरेंटली. उन्हें उन्हें होगा भरोसा कि हाँ इस बंदे को कुछ आता है, लाइक ही इज डन सम स्टफ, ही नोज सम स्टफ, right? So that's why GSoC opens a lot of doors. And as you can see, India participates. India has the most amount of students participating every year. And see, approximately 36 plus million lines of code have been produced. तो अगर आप इसको ओपन सोर्स वर्ल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो ये कितनी सही चीज़ है. लाइक ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स इतने सारे कोड, इतने सारे प्रोजेक्ट्स में इम्प्रूवमेंट्स हुआ है, वर्क हुआ है, नए नए फीचर्स इंट्रोड्यूस हुए एंड स्टफ लाइक दैट. Okay, that's statistics. Now, I guess that's the end of this presentation, not the end of the webinar. तो जाना मत, ठीक है? And if you are here, please watch till the end. अभी 16-15 minutes ही हुई हैं, so stick around and last तक देखो. थोड़ा 45 minutes और लगाते हैं. If you want to hang out after that, तो गप्पे मार लेंगे, बातें कर लेंगे. But for now, let's talk about GSoC. तो first program site. Okay, let's check out the program site. Let me open it up. Wait, is there any other slide? प्रोग्राम टाइमलाइन की हम वेबसाइट पे देख लेंगे. सो लेट मी ओपन द वेबसाइट, GSoC वेबसाइट. गिव मी 1 second. ओके, हैंग ऑन. All right, it's opening up. So this, okay, let me bring the cam back. This is the GSoC website. As you can see, you can just Google it, GSoC, and you'll find it. The first link, summerofcode.withgoogle.com. That's the website. And yeah, let's check it out, man. Let's check it out. So again, some statistic stuff, 36 million lines of code, blah, blah, this much number of students. What we need to see is the timeline. ठीक है, टाइमलाइन में now let's see हर एक स्टेप पे क्या होता है. ओके, वेरी सिंपल, बहुत बेसिक बातें हैं. एंड अगर आपको पहले कुछ GSoC के बारे में नहीं पता था या पता था, रिविजन हो जाएगा. नहीं पता था, देन यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग अबाउट इट. ओके, सो लेट्स सी. सो इस साल की अगर टाइमलाइन देखें तो जनवरी 15 में ऑर्गेनाइजेशन एप्लीकेशंस ओपन हुई, राइट? जनवरी 15 में ऑर्गेनाइजेशन एप्लीकेशंस ओपन हुई एंड देन फरवरी 6 को क्लोज हुई. यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने अप्लाई किया टू बिकम अ मेंटोर ऑर्गेनाइजेशन इन गूगल समर ऑफ कोड. Okay, and then 6 was the deadline. Then 20 February के around the organizations were announced. तो organizations announce होती हैं ताकि students देख सकें कौन कौन सी organization select हुई हैं and किसके साथ उन्हें work करना है, right? किसके साथ contribute करना है, किसके लिए proposal बनाना है और submit करना है. So that's that. And then 16th March से 31 March was the student application period. तो इस time पे students ने अपना proposal submit करना होता है. Okay. Now let me tell you, अगर बात ही कर रहे हैं हम इसकी तो सी 15 जनवरी को ऑर्गेनाइजेशंस एप्लीकेशन ओपन हुई थी. बट जनरली आई एडवाइस कि अगर तुम्हें अपना GSoC में सिलेक्शन पक्का करना है तो नवंबर या दिसंबर के अराउंड कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर दो, राइट? बिकॉज लेट मी टेल यू, प्रपोजल डज मैटर. बट अगर जो आपका मेंटोर है उसको आपका नाम पता है, उसको पता है कि आप क्या कर रहे हो, देन ही और शी दे विल डेफिनेटली सेलेक्ट यू, right? If they know your name, they will select you, चाहे कैसा ही प्रपोजल सबमिट कर दो. If they don't know you, however, तब थोड़ा बहुत आता है कि प्रपोजल बहुत सही सबमिट कर दिया या एंड टाइम पे कोई बहुत तगड़ा कंट्रीब्यूशन कर दिया, then you might get selected. But it's risky, तो सेफ रहता है नवंबर दिसंबर में स्टार्ट कर दो कंट्रीब्यूट करना. एंड वो कैसे करना है वो भी अभी बताते हैं ऑर्गेनाइजेशंस जब चेकआउट करेंगे. बट दैट्स इट फॉर नाउ. एंड देन ओके, 31 मार्च को स्टूडेंट एप्लीकेशन पीरियड एंड होता है, यानी कि स्टूडेंट सबमिट करते हैं अपने प्रपोजल्स. And after that, May 4 तक, यानी कि almost 1 month, roughly 1 month 5 days, इस टाइम तक जो ऑर्गेनाइजेशन है वो रिव्यू करती हैं एंड स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करती हैं जो उनके साथ काम करेंगे GSoC में, राइट? तो दैट्स इट. दिस इज द एप्लीकेशन रिव्यू पीरियड. एंड देन May 4 को दिस ईयर, इनफैक्ट दिस इज नॉट एवरी ईयर्स टाइमलाइन, ठीक है? हर साल डिफरेंट होती है. लास्ट ईयर अलग टाइम पे अनाउंस हुए थे प्रोजेक्ट, बट रफली ±20 days यही रहता है टाइमलाइन. ओके, so this year on May 4th the student projects were announced. तो उसमें GSoC की वेबसाइट पे रिजल्ट आता है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के नीचे स्टूडेंट का नाम होता है एंड अबाउट द प्रोजेक्ट, सो यू कैन चेक आउट द रिजल्ट देयर.
And then starting from May 4th, जिस दिन result announced हुआ है, to June 1 this year, that is the community bonding period. तो इस टाइम पे, as I said before, कि student time लगाता है to understand the organization better, to interact with the other people, you know, जो और field में काम कर रहे हैं उस organization में. So they interact with each other, and they basically also, yeah, they also think about the plan. Like proposal आपने बना दिया, उसमें आपने लिख दिया ये timeline है, हम ऐसे ऐसे work करेंगे. But then you have to make a new 1 month proposal कि हाँ first evaluation से पहले these are the things I'll achieve. ठीक है, इस डेट तक हम ये चीज़ें कंप्लीट कर लेंगे, ये सबमिशंस कर लेंगे. सो दैट ऑल ऑफ दैट हैपेंस इन द कम्युनिटी बॉन्डिंग पीरियड. एंड देन जून 1 से लेके अगस्त 24, which is roughly how many months? 3 months, minus 6 days, but 3 months. ये होता है कोडिंग टाइम. ओके, सो दिस इज द टाइम व्हेन स्टूडेंट्स कोड देयर समर अवे. तो इस टाइम पे अपने जो प्रपोज किया है, जो उनका पूरा प्रपोजल था, आइडिया कि हम ये करेंगे जीसॉक में, उसको अब इम्प्लीमेंट करना है. लाइक प्रपोजल वाज जस्ट बातें, यू नो, बातों में बोल दिया ये करेंगे, देन कोडिंग पीरियड में उस सबको इम्प्लीमेंट करना है. ओके, so that's what happens in the coding period. And 3 evaluation, as I said, अब जैसे 1 जून को अगर स्टार्ट हो रहा है, तो यू सी नीचे लिखा भी हुआ है, द फर्स्ट इवेल्यूएशन विल बी ऑन June 29th, राइट. June 29th से July 3rd, दैट इज द फर्स्ट इवेल्यूएशन पीरियड. इसमें मेंटोर जो है बेसिकली इवेल्यूएट करता है कि स्टूडेंट सच में कुछ कर भी रहा है या नहीं जीसॉक में. यू नो, काफ़ी स्टूडेंट होते हैं यार जो सिलेक्ट हो जाते हैं, बिकॉज लेट मी टेल यू अ डार्क थिंग अबाउट जीसॉक. सी, कुछ स्टूडेंट्स ना ऐसे ही सेलेक्ट हो जाते हैं बिना कॉन्ट्रीब्यूशन के, बिकॉज दे हैव गुड रिलेशंस विद द मेंटोर. लाइक यू नो, अगर मेंटोर उनका लाइक कजन है या फिर उनका कोई टीचर रह चुका है, तो काफ़ी टाइम्स ये भी होता है यार. ये थोड़ा इट्स अ नेगेटिव थिंग अबाउट गूगल समर ऑफ कोड, बट ऐसा होता है. लाइक आई हैव सीन स्टूडेंट्स, ठीक है, इफ दे नो द मेंटोर पर्सनली, उनका सिलेक्शन हो जाता है. एंड आई हैव सीन स्टूडेंट जिनका ऐसे सिलेक्शन होता है, फर्स्ट इवेल्यूएशन में उनका जो ऑर्गेनाइजेशन एडमिन या फिर जो मेन मेंटोर है, वो उसे निकाल देता है. I won't tell you the name of the organization, names of the organization or students, but it happens. Okay, it happens. So make sure आप like seriously, honestly work कर रहे हो, consistently contribute कर रहे हो जो आपने propose किया उस पे, you'll be fine. बहुत easy है, ज़्यादा tough नहीं है. So first evaluation June 29th, next evaluation will be on July 27th, and then final evaluation will be on August 24th. तो अगर आप जैसे जैसे तीनों evaluation पास करते हो, वैसे वैसे आपको स्टाइपेंड मिलता है एंड आप नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते रहते हो. राइट, phase 1, phase 2, phase 3. आई मेड द प्लान इन दैट वे. लाइक phase 1 में मैं ये करूँगा, phase 2 में ये, phase 3 में ये. एंड अगर मान लो आपको कोई इशू आता भी, अगर आप नहीं काम कर पाए, यू नो, कहीं पे जाना पड़ गया या स्टफ लाइक दैट, देन इट्स ऑल राइट. जस्ट टेल योर मेंटोर. कोई प्रॉब्लम आ रही है, मान लो लैपटॉप फूट गया, आग लग गई, मेंटोर को बताओ अपने सबसे पहले. ओके, इफ द मेंटोर नोज कि हाँ ये बंदा अभी ये कर रहा है, दिस इज द स्टेटस, लाइक इस बंदे का भी ये चीज चल रही है, देन यू विल बी फाइन. अगर मेंटोर से आप अच्छे से इंटरेक्शन कर रहे हो, बट डोंट बी लाइक कि यू नो एक कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं किया, इवेल्युएशन से 1-2 हफ्ते पहले तुम आ रहे हो एंड कह रहे हो कि सॉरी आई हैड दिस इशू. इट डजंट वर्क लाइक दैट. ठीक है, वो तुम्हें पक्का हटा देंगे, इवेल्युएशन फेल कर देंगे. So take care of that. And next is again August 24 to 31st is the final evaluation. अगर आप ये भी complete कर लेते हो, that's when you will be called a GSocer. कि हाँ भाई, इस बंदे ने GSoc complete कर लिया. And then after that, 31st August से September 7th तक लोग, I mean the mentors, they will evaluate your final you know phase work that you've done. And also obviously they will see कि शुरू से लेके अभी तक क्या काम किया है. यू नो, अगर मान लो आपको ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम्स भी रहे हैं मेंटोर्स के साथ, तो जस्ट राइट अ रियली गुड रिपोर्ट जिसमें कि आपने अच्छे से दिखाया, I've done this, I've done that, यू नो, मैंने अच्छे से काम किया है, देन यू विल बी फाइन. सो दैट्स व्हाट हैपेंस. एंड देन 8 सितंबर को रिजल्ट्स अनाउंस होंगे दिस ईयर, राइट. तो उसमें आ जाता है वेबसाइट पे कि दिस स्टूडेंट, ये स्टूडेंट पास हो गया, स्टूडेंट फेल हो गया है, एंड मेल भी आ जाता है गूगल का दैट यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीट गूगल समर ऑफ कोड, कंग्रेचुलेशंस ऑन पासिंग द इवैल्यूएशन, ब्ला ब्ला. बट दैट्स रफली इट. एंड दिस इज द टाइमलाइन जो हर साल रहती है. लाइक यही चीजें होनी है, बस डेट थोड़ा 10-15 दिन आगे पीछे हो जाएंगी, बट दिस इज द स्टफ दैट हैपेंस. ऑलराइट. Okay, what else? So again, apply code and then you at the end report लिखते हो which you can share publicly. तो अब हम क्या करते हैं, let's check out organizations. ठीक है, थोड़ा बहुत organizations देखते हैं. So as you can see यार, यहाँ पे काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन है. Now let's talk about ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट कैसे करनी है.
ये क्वेश्चन काफ़ी लोगों का रहता है, तो वही हम चेकआउट करते हैं, कैसे ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करनी है. ओके, वेयर इज गूगल आर्काइव, नीचे कहीं होगा आई गेस. ओके, ऑर्गेनाइजेशन है. सी इस पेज पे देख लो, लाइक ऑल दीज आर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो कि पार्टिसिपेट कर रही हैं इन GSoC एज मेंटर ऑर्गेनाइजेशन दिस ईयर. अगर आपको चेकआउट करना है उनके बारे में, और इफ़ यू वांट अ फिल्टर, देन यहाँ से आप फिल्टर कर सकते हो, राइट, किस टाइप के प्रोजेक्ट्स हैं. So let's check out Amahi, obviously because that was my organization in 2019. So why not? Shout out to Amahi. Okay, so आपने organization पे click किया, then let's see the projects. Now this is about Amahi की website. You can check it out. And this is about Amahi, क्या Amahi करता है and stuff like that. And here are the ideas list. सारी ऑर्गेनाइजेशंस लाइक जब प्रपोजल वगैरह स्टूडेंट बना रहा होता है, उससे पहले दे पुट आउट ऑल दी, लाइक अ लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दे पुट आउट आइडियाज लिस्ट. उसमें बेसिकली लिखा होता है कि दीज आर द प्रोजेक्ट्स, दीज आर द डिफरेंट थिंग्स दैट यू कैन प्रपोज टू वर्क ऑन, राइट. एंड टेक्नोलॉजीज में एज यू कैन सी रूबी ऑन रेल्स, जावास्क्रिप्ट, स्विफ्ट, एंड्रॉइड, गोलैंग. सो यहाँ से आप फिगर आउट कर सकते हो कि इज दिस ऑर्गेनाइजेशन फॉर यू, राइट. सारी ऑर्गेनाइजेशंस खोलो, उसमें देख लो कि टेक्नोलॉजी में, जैसे लेट्स से आई यूज्ड टू वर्क इन iOS फील्ड, तो स्विफ्ट है, देन आई वाज लाइक ओके, मे बी देयर इज एन iOS प्रोजेक्ट, देन आई गोइंग टू व्यू प्रोजेक्ट्स, सॉरी नॉट इन व्यू प्रोजेक्ट्स बट व्यू आइडियाज लिस्ट. ठीक है, नाउ दैट्स ओपनिंग इन अनदर साइड, बट बेसिकली उस पेज पे लाइक आइडिया लिस्ट होती है, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो असली में होते हैं. और यू कैन चेक आउट द गिटहब प्रोफाइल ऑफ द गिटहब पेज ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन. आप उनकी गिटहब पेज पे जाओ, वहाँ पे सारे प्रोजेक्ट्स अवेलेबल होंगे एंड यू कैन चेक इट आउट कि आप किसी में इंटरेस्टेड हो या नहीं, राइट. एवरीथिंग गुड. एंड देन लेट्स जस्ट स्क्रॉल डाउन, सी दीज आर द प्रोजेक्ट्स जो कि इस साल स्टूडेंट्स सेलेक्ट हुए हैं. श्रेष्ठ एंड अनुभव, ये दोनों iOS पे काम कर रहे हैं. ये दोनों चिराग एंड आकाश, दे आर वर्किंग ऑन एंड्रॉइड, right, and this guy is working on my server and stuff like that, web stuff. So that's that. So you can check it out कि इन्होंने क्या propose किया है, to work on. Like these are the different things जो इन्होंने अपने proposal में डाली थी. Not their proposal, because see proposal आपको publicly ऐसे नहीं मिलेगा, आपको student को personally contact करना पड़ेगा. If you want to check out my proposal, it's the link to my proposal is in the description, so go check it out. Not now, later on. ठीक है, but this is the rough description that we have to give when you're selected, or sorry, when you apply. And see, these are the mentors student के, and then yeah, that's pretty much it, man. That's pretty much it. So this is about the organization page. सारी organizations का ऐसे ही होता है. You can check out the different tools and technologies they use. You can check out कि क्या projects उनके हैं, idea list. You can click on view projects to see students ने क्या project पे work किया या work कर रहे हैं, right. And then if you click on chat, then that will take you to their public chat platform, right. Amahi uses IRC. A lot of organizations use Slack. Amahi also uses Slack, but that's private, that's not publicly open. So हर एक organization का एक chat platform होता है where you can basically interact and communicate with each other. ठीक है, so that's it. Now अब हम देखते हैं how it works. हो गया, organization हो गया. यहाँ पे कुछ हेल्प में जाके यू कैन चेक आउट सम रिसोर्सेज. ठीक है, एनरोलमेंट फॉर्म के बारे में इंस्ट्रक्शन, ब्ला ब्ला, रूल्स, FAQs एंड स्टूडेंट गाइड्स, ये सब आप पढ़ सकते हो खुद से. बट देयर इज नथिंग टू डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई हैव टोल्ड यू टुडे. एंड सी प्रोजेक्ट्स में क्लिक कर रहे हो, सो या यहाँ पे आपको 2020 के सारे प्रोजेक्ट्स दिख जाएंगे जो सिलेक्ट हुए हैं. ठीक है, तो ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो सिलेक्ट हुए हैं. यू कैन व्यू बाय ऑर्गेनाइजेशन, और यू कैन सी कौन कौन से टोटल प्रोजेक्ट्स हैं. Okay, so see, all these students are selected in Google Summer of Code this year. All right, man, that's it. And what else is left? Let's covered everything. Yeah, let's check out past projects. So अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे you can find कि कौन सी organization के लिए आपको contribute करना चाहिए and कौन सी सही रहेगी to work with them. All right, and okay, let me switch the tabs. Give me 1 second. All right, share screen, Chrome tab, and it kaun sa link hai? I believe this is the link. Yeah, archive. Okay, I hope you can see. दिख रहा होगा. हमारे टाइम जैसा नहीं रहा GSoC. यार सही कह रहे हैं. I mean हो रही है यार कुछ चीज़ें. GSoC has definitely changed, but
Come on, still, I mean, they are achieving the target, of spreading open source words about open source, but you know, we can't really complain. So okay, see, let's check out archive. So these are the here you can see the previous year projects. तो हम 2019 का चेक करते हैं, ठीक है, 2019. So this is how you select कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपको वर्क करना है. Okay, this is how you can select it. सो एज कैन सी, आप आर्काइव में जाओ, गूगल आर्काइव में, एंड सी 2019 या प्रीवियस ईयर प्रोजेक्ट्स देखो, सॉरी ऑर्गेनाइजेशंस देखो, एंड उसमें आप ये चीज़ ऑब्जर्व करो कि लास्ट 2-3 साल से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन आ रही है, राइट. लास्ट 2-3 साल से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन गूगल समर ऑफ कोड में सेलेक्ट हो रही है, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन लास्ट फ्यू टाइम्स सेलेक्ट होती आ रही है, देर आर चांसेस कि वो इस साल भी दोबारा आएगी, राइट, एंड ऐसा होता है. सो यू गो टू गूगल आर्काइव, चेक आउट ऑर्गेनाइजेशंस, एंड जैसे अमाही है, राइट. सो व्हाट आई डिड वाज, मैंने अमाही पे क्लिक किया था, एंड देन आई वाज लाइक, ओके लेट मी सी, ऑलराइट, दे हैव स्विफ्ट iOS, so they must be iOS projects. Then I check them out, उनकी लिंक पे जाके गिटहब प्रोफाइल पे कि okay, this is the project, and then I you know tried to download the project and then to run it, install it, and I really felt like Amahi, it gave me those kind of vibes कि हाँ इसके साथ work करने में मजा आएगा. There was another organization, Rocket Chat. मेरे time पे I'm sharing my experience, so I was confused between Rocket Chat and Amahi. यही दो organization थी main in iOS, other than Swift, I guess. But I was confused between these two. But once I started contributing to Amahi, then I was like, man, इसी पे focus करते हैं, and let's just give it all. And let me tell you, ये थोड़ा सा like it's not recommended by the seniors and by the previous GSoCers to just contribute to one organization. But I did because I didn't have much time and I didn't even want to participate in GSoC. Like honestly, I made a video on this, but I didn't want to participate in GSoC. I just wanted to try it. कि apply कर देते हैं मजे में. I attended a webinar and उसमें मजा आया थोड़ा, and I was like, okay, let's apply, right? But all right, let's put that aside. That's what I did, and then see, you can check out my project here, Abhishek Sansanwal, enhancement to Amahi iOS, right? Yeah, this is the description I gave. These were the deliverables that I promised to work on, that I proposed to work on, and then you can click on get the code. तो मैं आपको दिखाता हूँ यार मेरी रिपोर्ट कैसी थी, राइट. I read the comments in a bit. एक बार रिपोर्ट देख लेते हैं. So give me again 1 second. I'll switch the tabs. Give me 1 second. I hope the stream is going good. The voice is clear. सब ठीक चल रहा है. Right, okay, here is the final report. And so as you can see on the screen, I'm sharing with you right now. Yeah, I hope you can see. Right. All right. So this was my report, man. Amahi, enhancement to Amahi iOS project. And ये मैं दिखा रहा हूँ आपको basically just to get a feel कि end में क्या करते हैं. So see, introduction कि what I worked on, and then the work. These are some of the features that I implemented, and these links are to the GitHub, pull requests that got merged or that didn't get merged. So that's about it, man. See description and the different things I worked on. And then in the end, this is the contribution list, all the PRs I made during GSoC. And then let's check out, this is the future work. There were a few things that I had to fix. So I said, ये वाली चीज़ बाद में कर लेंगे. And this was my experience, like मजा आया, blah, 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 blah. Thank you for the opportunity. That's it. Right. And that's it, man. This is the report. Now let me share with you the proposal. ठीक है, प्रपोजल हमने बात कर ली है, ऑर्गेनाइजेशन कैसे सिलेक्ट करना है, हमने ये भी बात कर ली कि नवंबर से स्टार्ट कर दो. इवन दो आई स्टार्टेड कंट्रीब्यूटिंग ऑन 1 मार्च, लाइक आई बिलीव 1 मार्च वाज माय फर्स्ट कंट्रीब्यूशन. मैंने तब स्टार्ट किया कंट्रीब्यूट करना, बट डेफिनेटली जस्ट टू बी सेफ, जितना स्टार्ट जल्दी करोगे उतना अच्छा है, बिकॉज मेंटोर्स को उतना अच्छे से इंटरेक्शन कर पाओगे, एंड उतना अच्छे से दे विल नो यू एंड यू विल गेट टू नो द ऑर्गेनाइजेशन. ओके. Now, what do we do? Let me share my proposal. All right, let me share my proposal. I'll read the comments. Give me 1 second. Let me open up my proposal. It's right here. Yep. Wait, give me 1 second. Okay, it's opening up. I'll share the proposal with you now. I'll share the proposal. 1 second. Share screen, and share the proposal.
All right, guys, this was my proposal, the proposal that I submitted to Amahi. Okay, let's check it out. So हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक टेम्पलेट होता है, राइट? देयर इज अ टेम्पलेट दैट यू हैव टू फॉलो, एंड it's not too like it's not a necessity, but generally everyone should follow the template that the organization gives to them. So yeah, Mahi ka template tha basically. So see, Mahi GSoC 2019 proposal, project title, enhancement to Mahi iOS, and this is the abstract, like a rough idea of what I'm going to work on, right? And then you can see now description. So almost सब organizations का same रहता है, the proposal. So you can check mine, right? So as you can see, I've in the description I've mentioned Chromecast support, blah blah. I've also added screenshots. Yesly mein I didn't implement these before, at the time of submitting the proposal, but I just made these rough screenshots. I mean, I made rough designs and I added those to the proposal. And then see, I've mentioned this is the issue that I'll work on, and I've also mentioned the code snippets, like ये करना पड़ेगा to achieve this. And this is so powerful. इससे आपकी जो mentors हैं उन्हें लगता है कि हाँ, this guy knows what to do, right? This guy knows his stuff. So that's it. And as you can see, man, I've added a few lines of code, and then see, adding a cast button. It was really fun, man. Working on Amahi was really, really fun. Okay. And then see, again, more stuff. I propose to work on the media player, and again this and that, the music player. All right, the link to my proposal is in the description, so if you want to check it out, then go check it out. And also, guys, if you are new, कौन कौन बंदे हैं जो यहाँ पे पहली बार हैं चैनल पे, please type in I am or hi, just type it in the chat. I just want to know if you are here for the first time on the channel, then just let me know, please. Right, and then, man, this is some more features I propose. Again, as you can see, all the designs, all the code snippets, and yeah, that's pretty much it. And then after the description, you have to add timeline, right? This is the timeline, like timeline about ki is time period mein I will do this. Okay, and this is good. You have to add this, you must add this. Like as I've said, community bonding period may I'll make sample apps to build and implement functionalities, blah blah. I'll learn how to develop tests, and I'll enhance the understanding of the community and the project, right? And then week 1 may I'll work on these things. Week 2 may I'll add Chromecast support, I'll work on the video player, and I'll write tests, stuff like that. So as you can see, मैंने हर एक evaluation का like 3 week के बाद, this is the first evaluation, and then first evaluation के बाद second evaluation से पहले I'll work on these things इस week में ये. Now आपको असली में इन्हीं चीज़ों पे काम नहीं करना होता, right? इन्हीं चीज़ों में काम नहीं करना होता, but डेफिनेटली सिमिलर रहना चाहिए आपका, बिकॉज जो आप प्रपोज कर रहे हो उसी पे तो वर्क करोगे, राइट? बट ऑब्वियसली वंस यू आर सिलेक्टेड, देन यू कैन मेक अ न्यू प्लान कि फर्स्ट इवैल्यूएशन से पहले दीज आर द थिंग्स दैट आई विल वर्क ऑन. ओके, एंड लेट्स से आपको 1 वीक के लिए कहीं पे जाना है, देन व्हाट यू कैन डू इज mention that in the proposal. I'll tell you where. Let me scroll down. See, testing and verification, then references, blah blah, then experience and education, like about me and why I'd be a good fit. And these were the contributions that I'd made before submitting the proposal. Okay, these are the contributions I've made before submitting the proposal. Okay, I see a lot of people are here for the first time. So guys, if you are new, do one thing. Please subscribe to the channel and hit the bell icon. Okay, do hit the bell icon यार, क्योंकि काफी लोगों को notifications नहीं मिलती. We interview a lot of really cool people working in good companies, in the tech space every Sunday. Like कल भी interview है, we're interviewing Anjali tomorrow. She's incoming. She's actually started her internship at Facebook. So she's software engineering intern at Facebook. So if you are new, do one thing, hit subscribe right now. तभी आगे बढ़ेंगे. Go and hit subscribe. Please subscribe करो and hit the bell icon so that जो भी videos हम डालें उसकी notification आपको मिल जाए. Okay, without wasting any time, let's continue. So see, this is what I was talking about, other commitments. तो यहाँ पे as I've written कि I will go to this conference in Bangalore, right? So I'll be gone for the last week of July, blah blah, and stuff like that. But I have added कि मेरा इस time पे exams होंगे. I'll not be able to work for more than 5-6 hours, and otherwise I'll put in 10 to 12 hours on a daily basis.
इवन तो मैंने असली में थोड़े कम टाइम पुट इन किया था. आई मीन कोई नहीं काम करता है 10-12 घंटे असली में, कमी कमी टाइम वर्क करते हैं. बट इट्स गुड इफ यू आर कंसिस्टेंट, तुम्हारा ही फायदा है, वरना ज़्यादा प्रेशर रहता है इवेल्यूएशन के टाइम पे. And that's it, man. I have no other obligations, and I will work full time on the proposed project during the GSoC period. Right. So it's a pretty decent proposal, pretty good proposal. I got a lot of messages from 4, 5, I believe 7, 8 students that said ki the proposal really helped them, and they got into Google Summer of Code because of my videos and my articles. So trust me, man. If you follow all these points I've shared today and in my other GSoC videos, you will get in. Just start early, and ठीक है हो जाएगा. All right. So and let me tell you, man. See, this is the proposal, but I believe the thing that really got me selected was because the mentor knew me. I mean, not in a way जो मैं बात कर रहा था about negative side of GSoC, but in a way कि I was really active. Like this is what I tell to everyone. You have to be very active in the community. Like अगर कोई बंदा आया नया बंदा, and he's figuring out कि how to do what, like project कौन सा, mentor कौन, help them, right? Active रहो community में. So that is one of the things that really impressed my mentor, plus the contributions that I made. Obviously, like let me show you. Like you see, these are the contributions that I had made before submitting the proposal. So see this one, thumbnail previews. Like this was actually a task to be worked on during Google Summer of Code. तो मैंने ये GSoC से पहले ही कर लिया था. So I believe it was a significant contribution. Right? There's a thing like just contribution and then there's significant contribution. तो अगर मान लो इसकी बात करें, नेक्स्ट बटन रिटर्न्स टू पासवर्ड टेक्स्ट फील्ड, ये बहुत छोटा सा चीज है. लाइक 2 लाइन का कोड ऐड किया एंड काम हो गया, बट स्टिल अ कंट्रीब्यूशन. But still, what counts is all these other major contributions that you work on, right? And I always tell GSoC पे selection करना है, then just make sure that in your organization you are the most active person, right? I observed closely a few people in Google Summer of Code this year, and I was like, इन बंदों का तो पक्का GSoC होगा ही होगा, and they actually got selected. राइट, अलग से ही पता चल जाता है. आई मीन 2-3 ऑर्गेनाइजेशंस तो उनकी नोटिफिकेशंस आती रहती है जब भी मैसेजेस वगैरह बातें कर रहे हैं. सो आई न्यू कि इन बंदों का तो होके रहेगा, बिकॉज दे आर सो एक्टिव, दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग, गिटहब पे कॉन्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं. सो जस्ट कीप दैट इन माइंड. ऑलराइट, यू हैव टू बी द मोस्ट एक्टिव गाय, द मोस्ट एक्टिव गर्ल, द मोस्ट एक्टिव पर्सन, एंड you will get in. Okay, so that's my proposal, man. That's how you write a good proposal. If you want to see, I do have videos on my channel specifically about proposal कैसे लिखना है, organization कैसे select करनी है. And then I have a video titled everything about GSoC in 5 minutes. So check out these videos later on just to revise everything that we've talked about today. And yeah, you should be fine. Now next, man, next is, okay, let me just remove this screen, and I believe that's all about GSoC. Now we'll take questions. Okay, let's take questions. So questions for sure. Let me scroll up and see. And guys, again, if you are new, please subscribe to the channel. Again and again, I'm telling you, because I'm working on so many good projects and I don't want you guys to miss any of it. ठीक है, काफ़ी एक्साइटिंग प्रोजेक्ट्स पे अभी हम काम कर रहे हैं, एंड there's so many videos that are going to be coming up in a few days. So please subscribe and hit the bell icon. All right, that's enough marketing हो गई. अब बात कर लेते हैं कमेंट्स के बारे में, क्वेश्चंस के बारे में. So I'll scroll up. ठीक है, ऊपर से देखते हैं. Which development has more organization? यार इसके लिए आप चेकआउट कर लो. I mean, I've seen कि I can tell you किस में कम है, किसमें कम है. And as I believe Piyush said कि as there are not many organizations for iOS development, that is true. So ये भी आप चेकआउट कर लो थोड़ा. But see, never do this कि इस ऑर्गेनाइजेशन इस फील्ड में ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन है, इस फील्ड में ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं, तो लेट्स वर्क इन दैट फील्ड. राइट, आप ये देखो आप किस फील्ड के लिए पैशनेट हो, विच इज़ द फील्ड दैट इंटरेस्ट यू, एंड देन उस फील्ड में प्रोजेक्ट फाइंड करो. है तो ठीक है, नहीं है तो छोड़ो. Like it's not a necessity to work in Google Summer of Code. इसके बिना भी लोग have achieved really great heights in life. Okay, so please don't think कि किस फील्ड के लिए हम वर्क करें, किस फील्ड में वर्क करें to get into GSoC. रिवर्स सोचो, like I am good in this field, then what are the projects in this field? ठीक है, and then वैसे आप अप्रोच करो. So okay, let me just get back to the slide again. Give me 1 minute.
we'll get back to the slide and we'll continue with the questions. Okay, where's the slide? GSoC slide. Okay, there it is. 1 minute, guys. 1 minute. I'm opening up the slide just to have the questions page, and I'll read the comments. Give me 10 more seconds. All right, I'll read the comments now. Okay, there is the slide. Let me switch tabs. I'll share the screen with you. Where is it? Where is it? Yep, right there. Okay. All right. So questions. Why Force Asia is not selected this time? यार ये क्वेश्चन मुझसे इतने लोगों ने पूछा है, फॉर्स एशिया क्यों नहीं सेलेक्ट हुई. भाई मुझे क्या पता, जाके फॉर्स एशिया वालों से पूछो ना. आई मीन ठीक है, जस्ट गो एंड आस्क दोस पीपल. लाइक आई एम नॉट टू अवेयर क्या सीन था फॉर्स एशिया का, बट गो चेक इट आउट. There can be hundreds of reasons. Maybe they didn't apply or whatever. Maybe उनके आज जो उनके this year they have different targets to achieve. जो भी रीजन रहा, इट्स नॉट लाइक कि उनका झगड़ा हो गया गूगल वाले के साथ. आई मीन वॉट एवर, जस्ट गो एंड आस्क फॉर्स एशिया गाइज. उनकी जो कम्युनिटी है वहाँ पे पूछ लो कि यू आर वंडरिंग व्हाई फॉर्स एशिया डिडंट गेट सिलेक्टेड और व्हाई फॉर्स एशिया डिड नॉट पार्टिसिपेट. आई एम नॉट टू श्योर अबाउट दैट एंड आई वॉन्ट गिव यू रॉन्ग इन्फो. ओके, ऑल राइट, नेक्स्ट. आई एम इनटू iOS डेवलपमेंट, सो विल आई हैव चांस. और क्या पीयूष भाई, तेरे को बोला तो है GSoC करना है, करना यार, एंड चांस होगा. लाइक लेट मी टेल यू, माही को देख यार, इस साल भी आई है, लास्ट ईयर भी आई थी, एंड आई बिलीव उससे पहले भी आई थी. अमाही इतनी कंसिस्टेंट है एंड आई बिलीव नेक्स्ट ईयर भी आएगी. तो अमाही को ट्राई कर ले, देख ले और कोई ऑर्गेनाइजेशन है या नहीं, क्योंकि हर साल देख 2 तो रहेंगी. आई एम प्रीटी श्योर iOS में मिनिमम 2 ऑर्गेनाइजेशन तो रहेंगी. ठीक है, तो करता रहे, स्किल डेवलप करता रहे, अप्लाई कर दियो. नहीं होगा तो कोई नहीं, तो स्किल बहुत सही डेवलप हो जाएंगी. तब तक you'll find better opportunities. Okay, how do we know the organization we contributing to will be selected? So इसकी हम बात कर चुके हैं, we've already talked about it. You go to Google Archive and you check out the pattern, what organizations have been consistently participating in Google Summer of Code, and जिन्होंने किया है, there are chances कि वो दोबारा करेंगी. That's I know. I mean, you cannot know for sure. You can just predict कि हाँ इसकी chance अच्छे हैं that they will participate again, right? So that's that. Oh, I'm sorry, I forgot to. Never mind. How to contribute and from where? So इसकी बात कर चुके हैं, कैसे contribute करना है. Okay, इसकी बात हमने नहीं की है ना. Right. So guys, इसमें I made a video how you contribute to GSoC. But let me tell you, when you open an organization's page, वहाँ पे उनका GitHub link होगा. Go to the GitHub project of that organization. Go to the GitHub profile of that particular project. ठीक है, उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की गिटहब रिपोजिटरी पे जाओ, एंड देन व्हाट यू हैव टू डू इज रीड द रीडमी फाइल कि वो प्रोजेक्ट क्या कर रहा है, ऑल द डिस्क्रिप्शन एंड स्टफ, एंड देन यू विल नो कि हाँ मेरी स्किल्स थोड़ी बहुत मैच कर रही हैं टू द स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोजेक्ट. ठीक है, एंड वंस यू नो दैट, उसके बाद आप प्रोजेक्ट को फोक कर लो, पहले क्लोन फोक कर लो, फिर क्लोन कर लो, एंड देन उसको जस्ट चेक आउट द प्रोजेक्ट. एंड बेसिकली आपने यही करना है, आपको ऐसे ही पता चलेगा इफ यू कैन वर्क ऑन दैट प्रोजेक्ट बाय एक्चुअली ट्राइंग टू वर्क ऑन इट. ठीक है, इट विल सीम ओवरवेलमिंग, बट एक प्रोजेक्ट उठाओ एंड देन लेट मी गिव यू एन एग्जांपल ऑफ iOS प्रोजेक्ट. राइट पीयूष, यू रिलेट टू दिस. लेट्स से आपने अमाही iOS डाउनलोड किया, तो आप अमाही iOS को फोन में खोलो एंड सी की फर्स्ट पेज क्या खुल रहा है, लॉगिन स्क्रीन फॉर एग्जांपल. तो उस लॉगिन स्क्रीन के corresponding एक क्लास होगी, उस क्लास में जाओ एंड उसके कोड को देखो. सो इस पूरे बड़े से प्रोजेक्ट को यू हैव टू ब्रेक इनटू फ्रेगमेंट्स. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी स्मॉल मॉड्यूल एंड विद द फ्लो, जिस फ्लो में वो एक्चुअली प्रोजेक्ट काम कर रहा है. ठीक है, अगर किसी और मॉड्यूल की डिपेंडेंसी है देन उस मॉड्यूल को चेकआउट कर लो, बट टेक इट स्लो, टेक इट इजी. इट्स वेरी इजी, नथिंग, इट्स नॉट रॉकेट साइंस. ठीक है, कोई टेस्ला स्पेसएक्स वाली चीज नहीं है, इट्स सुपर इजी. And that's how you can start. That's where you can start contributing. And also, if you're a beginner in the open source world, I would advise you to first, what was I saying? Yeah, if you're new to the open source world, the initial contributions that you can make is the issues on the GitHub repository. Like हर एक organization के project पे जो repository है, GitHub repository, उसमें issues मिलेंगे आपको. एक टैब होगा इश्यूज का, उस पर क्लिक करो एंड ट्राई टू सॉल्व दोज इश्यूज.
उसमें लाइक काफ़ी टाइम होता है ईजी इश्यूज ना ऐसे ही छोड़ देते हैं बिकॉज देर आर more complex features to work on. तो you find the easiest issues, the smallest issues that you can work on, and उस पर आप वर्क करो. ठीक है, उन पे आप contributions करो, उन issues पे, उन bugs को आप fix करो, and then yeah, that's how you can start. Next is you can check previous archives in GSoC. Yeah, exactly. You can check out the previous archive to figure out if the organization will participate again. Right? All right, good. Let's see guys, keep posting questions. I'm scrolling through the comments, and again, Google Summer of Code से related नहीं, technology, business, and career related, placement, internship, इन सब से related भी कोई भी questions है तो पूछ लो. This is why I'm doing this in I thought कि हिंदी में करते हैं because it's meant to be a really chill stream. Like कोई formal कुछ नहीं है, जो भी question है just type it in the comments. ठीक है, any questions you have, please type it in. I believe questions होंगे because you're a student, you must be worried, coronavirus, lockdown, blah blah. So please go ahead and ask any questions. GSoC is for learning, race नहीं है, तो प्लीज़ सबको रिक्वेस्ट है कुछ सीखने के लिए करो. हाँ ब्रो, बिल्कुल यार सही कह रहे हैं, कुछ सीखने के लिए करो. इट्स नॉट अ रेस, इट्स नॉट अ कॉम्पिटिशन. ठीक है, GSoC has become IIT. I mean हाँ वही बात है, लाइक सी इट्स नॉट अ रेस. तुम अपने लिए कर रहे हो, GSoC इसलिए कर रहे हो बिकॉज यू विल लर्न अ लॉट. ठीक है, या ऑब्वियसली अगर आपका इंसेंटिव, इफ यू हैव इंसेंटिव इन माइंड देन डू इट फॉर दैट. But like please don't really take it as a competition. And definitely if you're really going for incentive, then आप खुद ही आपको मजा नहीं आएगा. You won't be able to stick to the project for 3 months. 3 महीने तक काम करना है. So please keep in mind कि आप कुछ सीख रहे हो, you're collaborating. It's something new and something different. It's a new and different experience. And it's hard to find projects where you're collaborating internationally. So open source and particularly GSoC is the best way to do that. Did I miss any comment? Okay, I did miss a few. Let me scroll back up. What is the step-by-step plan, like what to do in the first year? तो यार फर्स्ट ईयर में as always develop your skills. ठीक है, फर्स्ट ईयर में अपनी skills develop करो, period. That is all you have to do. फर्स्ट ईयर में ऑब्वियसली लाइक पीपल वुड से कि मजे मारो ब्ला ब्ला, बट सी लेट मी टेल यू, जितना जल्दी आप शुरू करोगे चीज़ें उतना ही जल्दी बाकी चीज़ें होंगी, उतना ही जल्दी और अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी. तो फर्स्ट ईयर में try different fields. Trust me, in my first year I did ML, Android, web, iOS. I tried all fields. Like I spent thousands of rupees trying different fields, doing different courses, and then I was like, okay, iOS field is one that really interests me. Okay, so that's how you figure out. Try different things, and just see which one really makes you feel like, okay, this is something I could really work on all day long. I hope that answers your question. So do that. And obviously like first year में अगर आप skills develop कर रहे हो, and जो भी आप skill develop कर रहे हो, जहाँ से भी सीख रहे हो, make sure that learning के साथ साथ implementation भी हो रही है. What I mean is कि अगर आप कुछ सीख रहे हो तो उसके अराउंड कोई project implement करो side by side, right? किसी project पे work करो. Because I've seen this is the mistake that a lot of students do. They keep on learning and learning. They stay stuck in the learning phase and इतने में कोई project develop ही नहीं करते. लाइक महीने महीने तक लर्निंग चलती रहती है उनकी. सो प्लीज डोंट डू दैट. कुछ सीख रहे हो, साथ में कुछ प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करो उस चीज का. ठीक है, कुछ प्रैक्टिकल कुछ होना चाहिए साथ में. ब्रो एरर में क्या लिखना फॉर फ्यूचर वर्क्स में? मतलब समझ नहीं आया ब्रो, दोबारा पूछना. एरर्स में क्या लिखना फॉर फ्यूचर वर्क्स में? जस्ट रीफ्रेज द क्वेश्चन, आई डिडंट गेट इट. Okay. Can you also brief us a bit about open source, how to start with contribution? तो इसकी बात कर चुके हैं यार, कैसे contribute करना है GitHub पे, right? We've talked about it. Now let's scroll down. Okay. Hey, I need to change my LinkedIn URL, but my old URL is on resume and other platforms. What should I do? Dude, if your old URL is on your resume, then do what? Change the URL and update your URL on the resume and other platforms. I mean, simple as that. Like change हो गया तो वहाँ भी change कर दो. ठीक है, but do it like easy रहते हैं. And if you're talking about resume, let's say you're writing your whole LinkedIn URL, then वो दिखने में इतना अजीब लगता है. तो and guys, if you're new, then you might be wondering क्या बातें चल रही हैं. तो I posted this video
about LinkedIन, building a LinkedIn profile, कल पोस्ट किया था, check it out. तो उसी के रिलेटेड क्वेश्चन है. I said कि जो LinkedIn URL होती है उसको कस्टमाइज करो. If whatever your name is, do it like linkedin.in/whatever, then your name. Okay. So do check that video out, and let me continue reading the comments. Bro, I want to know your point of view on iOS development, Swift, even biased review. Yeah, मेरा review तो देख, मेरा biased obviously रहेगा. And see, I do really see a huge scope in iOS space. Because as you can see, man, Android जो है ना compared to iOS बहुत saturate हो चुका है, बहुत लोग घुस चुके हैं उसमें. Now don't be like कि हाँ saturation की बात है तो Flutter शुरू कर देते हैं. उसमें I'll make a video soon Flutter के ऊपर. I always advise to go to do native instead of these cross-platform technologies, frameworks like Flutter, React Native. But उस पर अभी कोई बात नहीं करेंगे, कोई question नहीं, ठीक है? उस पर I'll make a video, तब discussion करेंगे. Wait, I guess my AC is not working. Okay, we're good. Question: web development good or not in GSoC? It is great if you like it. अगर आपका वेब डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है देन इट इज ऑसम. अगर आप वेब डेवलपमेंट करना चाहते हो देन ऑब्वियसली इट्स ग्रेट फॉर GSoC as well, because there are a lot of projects in this field, right? Okay, whoa, something happened. Let me scroll back up. Bhaiya, is machine learning good for GSoC as I have interest in it? यार अगेन देख, मशीन लर्निंग में तुम देख लो, बट लेट मी टेल यू, इफ यू आर अ फ्रेशर, इफ अगर आपने अभी स्टार्ट किया मशीन लर्निंग, then make sure you really do some stuff before trying GSoC. Like I'm not even too sure, but obviously like see Python इतनी जगहों पे यूज होता है. If you're good at Python, you can work on almost all projects. Like हर organization में Python यूज होता है, backend में या फिर web related चीज़ों में, ML algos वगैरह में. So definitely if you're interested in ML, just make sure you're really good at Python and there will be opportunities for you. ठीक है? Again I'm telling you, follow your interest. जिस पे interested हो वो चीज़ करो. And guys, if you're new, please subscribe, hit the bell icon. Please subscribe and hit the bell icon. अगर आप bell icon नहीं दबाओगे then you won't get any notifications. तो subscription का कोई फायदा नहीं है. So please subscribe, hit the bell icon. And yeah, let me take next question. What are the must required skills for GSoC? So again, Ishika, it depends on the field that you're interested in, the field that you work in, your field of work. So let's say you're working in Android, then develop skills around that. Get really good at Android, make projects around that. Okay? और ऐसा कुछ नहीं GSoC एक कोई एग्जाम है जिसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो. You know some stuff and then उससे आप प्रोजेक्ट्स पे वर्क करो प्रोजेक्ट्स के साथ. So it really depends on what your skills are or what field you want to get in. तो उस field में skills develop करो and then apply for Google Summer of Code. ठीक है? Any other questions? Oh, there are a lot of questions. Yeah, Piyush bro, देख हो जाएगा GSoC next year and करता रहे try. ठीक है? अभी skills develop करता रहे, you will definitely get in. Okay, next question, internship के round. भैया internship के लिए कैसे selection होता है? So okay, I can give you a good answer because I am founder of a tech firm and I am also in contacts with a lot of companies, hundreds of companies. So I do know कि internship में क्या देखते हैं, blah blah. I'll make a video on it, but here's my short answer. ठीक है? Internship में selection ऐसे होता है. First you apply, then आपका interview होता है. अगर आप इंटर्नशाला वगैरह पे अप्लाई करें so you might get an assignment, जिसके बाद वो हमेशा असाइनमेंट करवाने के बाद रिजेक्ट कर देते हैं जनरली. बट अच्छी कंपनीज ये सेलेक्ट कर लेंगी. बट दिस इज द रफ प्रोसीजर. यू अप्लाई इंटर्नशाला, लिंक्डइन या करियर सेक्शन ऑफ कंपनीज एंड देन योर रेज्यूमे इज रिव्यूड. ठीक है? सो दैट्स व्हाई रेज्यूमे इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर प्रोफाइल. बिकॉज लेट मी टेल यू, अ लॉट ऑफ टाइम्स even real people won't evaluate your resume. Like बड़ी companies में they have algorithms reading your resume. Real people उसे देखते भी नहीं resume को. But mostly like जो HRs देखते हैं, they spend around 6 to 10 seconds on your resume. तो make sure कि आपके resume में it's one page and वो बहुत like एकदम perfect है and it really shows the best of you. And वो कैसे करना है, इस पे I uploaded my second last video
It was on how to write a kick-ass resume. Check it out on my channel, right? Usko channel ko subscribe karo. Go to my channel. Not now, please. After this session, go check out that video. कि कैसे आप रेज्यूमे बिल्ड कर सकते हो. सो इफ यू हैव अ गुड रेज्यूमे, यू अप्लाई, देन डेफिनेटली यू विल गेट अ कॉल बैक, यू विल गेट अ कॉल फ्रॉम द कंपनी, देन आपका इंटरव्यू होता है. इफ यू हैव द स्किल्स, then you will definitely go through the interview easily, and then you start working for the company. That's the basic, the general step of how you get an internship. GSoC में कैसा वर्क होता है, टफ और इजी? प्रो GSoC में यार देख, वेंते हो आई गेस पर्सनल मैसेज में बोला था कि डिपेंड्स ऑन व्हाट यू आर प्रपोजिंग. अब अगर तू वहाँ प्रपोज कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन, मैं ये उखाड़ दूंगा 3 महीने में, इट्स नॉट पॉसिबल, देन कैसे करेगा? इट विल बी टफ फॉर यू, राइट? तो प्रपोज कर चीज़ें जो सिग्निफिकेंट है. इफ यू हैव द स्किल्स, ईजी रहेगा. एंड ऑब्वियसली अ लिटिल चैलेंजिंग, आई विल नॉट लाई, इट इज़ अ लिटिल चैलेंजिंग, बट जस्ट कम्युनिकेट टू योर मेंटोर. अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, मेंटोर से बात करो, और ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिटी में मेंबर्स होते हैं उनसे बात करो, बिकॉज सी मेंटोर्स आर देयर टू गाइड यू, राइट? तो टेक हेल्प. इफ यू स्टक एनीवेयर, जस्ट टेक हेल्प ऑफ योर मेंटोर एंड it'll be easy, right? अपने माइंडसेट को ऐसे ही रखो कि easy होगा. It's not going to be tough, and it will be easy, trust me. Bro, I have MacBook Air but don't have iPhone, so is it okay to start iOS development? हाँ यार, start कर ले, simulator यूज कर सकता है to begin with, but I would say कि if अभी start कर ले. if you feel like कि हाँ iOS में मजा आ रहा है, then कुछ 4-5 महीने बाद या 1 साल बाद iPhone ले लेना. Second hand is सही, but iPhone ले लियो. Like to upload, to submit your apps to the app store, you must have an iPhone. तो उसके लिए you do need an iPhone. And then next is how to start career in iOS development. Oh, I remember you asked this on Instagram. Okay, let me tell you. To begin with, do this course by Angela Yu on Udemy. It's the best course. iOS bootcamp करके होगा, Udemy पे सर्च कर लो iOS, आपको फर्स्ट कोर्स उसी का मिलेगा. Right, it's the best course out there. Start with that, or you can start with Udacity's nano degree on iOS. But वो थोड़ा expensive है. It's like 30 or 40,000 rupees per month, whereas the Udemy course is just, I guess, 700 or sometimes 450 or 1200. So it's pretty cheap. So you can start there. Udemy पे course है, उसको start कर लो, ठीक है? And उसके साथ साथ आपने project बनाते रहो. जब आपकी ये चीज़ें हो जाएंगी, once you complete the course, then there is the website rayvanderlake.com. Let me check if that is the website. Just Google it, man. rayvanderlake.com, or hit me up on Instagram. I'll send you the link. Yeah, rayvanderlake.com is the website. That is the best website for iOS. Like for iOS tutorials and everything related to iOS, it is the best website. So go check it out. And yeah, that would be the approach. Okay. उस वेबसाइट पे आप डिफरेंट ट्यूटोरियल्स ट्राई करते रहो, ब्लॉग्स पढ़ते रहो. एंड दिस इज सेम फॉर ऑल डिफरेंट फील्ड्स. हर फील्ड में आपको यही अप्रोच रखना होता है टू गेट गुड एट एनीथिंग, राइट? यू फर्स्ट गेट द स्किल्स, डेवलप प्रोजेक्ट्स, लुक फॉर एन इंटर्नशिप व्हेन यू आर कॉन्फिडेंट इनफ, एंड देन एक इंटर्नशिप की, देन दूसरी इंटर्नशिप कर लो. यू कीप डेवलपिंग योर स्किल्स. एप्पल हर महीने कुछ नया लॉन्च करता रहता है, कुछ नया फ्रेमवर्क या टेक्नोलॉजी, या फिर कुछ नया कुछ भी लॉन्च कर देता है, उनका कोई भरोसा नहीं है. सो स्टे अप टू डेट विद व्हाट्स गोइंग ऑन इन द iOS वर्ल्ड. एंड नेक्स्ट, while learning new languages and frameworks, I can learn consistently how to overcome procrastination. Should I write concepts while learning or directly implement them? I mean, you don't need to. What do you mean by write concepts? Notes बनाएगा क्या बैठ के? कोड है यार, प्रैक्टिस ही करेगा ना उसकी बैठ के, like लैपटॉप पे टाइप ही करेगा. You're not going to make any notes. But if you do want to, go do it, right? And how to overcome procrastination? यार इसके लिए keep a certain deadline for whatever you're doing. If you don't have a deadline, खासकर अभी लॉकडाउन है, तो you might be like कि अरे यार लॉकडाउन है, I have a lot of time, तो नहीं हो पाएंगी चीज़ें. कीप अ डेडलाइन कि मेरे को लाइक इस मंथ के एंड तक कंप्लीट करना है ये पर्टिकुलर चीज, टू डू दैट थिंग. अगर मान लो आपका कोई इंटर्नशिप का मोटिव है, तो यू विल बी कॉन्फिडेंट इनफ एंड मोटिवेटेड इनफ टू कीप वर्किंग ऑन इट. And this is how you will be consistent. If you're really passionate about that framework, that technology, you will keep learning it. उस पे काम करते रहोगे, ठीक है यार. तो इसके लिए I can give you any technical tip, but यही टिप है, make sure you're passionate about it to start with.
Like for example, a lot of people that start with machine learning, they are like, yaar maza nahi aa raha, not maza nahi aa raha, they're like, yeah, I cannot work consistently. I mean, the thing is, see, that's not your passion. Like, it's not for you, just give up, you know. I mean, not just give up, but just make sure that it is really what you want to do. Don't be in a pressure, don't go with the hype, like, you know, machine learning ka hype hai to hum wahi cheez kar rahe hain. Don't do that. I hope that helps, and you know, think, just figure out yourself, and let me know if you need any further help or guidance. Okay, let's take next question. Bhaiya, is Android app development good for GSoC? Because मैंने अभी start ही किया है. So will I have chance in 2021? Yeah, I believe you will. देखो अभी what is the month? कौन सा महीना चल रहा है? I guess it's June, right? So June, July, August. You can learn Android by August, and you can work on a project by September. Then you can do an you can do an internship in October and November. You can work on your own project side by side till January, and then January, December में contribution start कर दो. So I believe you can. You're not too late. ठीक है, if I compare to my experience in Google Summer of Code, I contributed in March, and trust me, I was not really too confident in iOS, even though मैंने कुछ projects कर लिए थे, internship कर ली थी, but I was not confident. And you know, to be honest, I still don't know Amahi कैसे काम करता है पूरा. There are so many modules that I haven't even checked out yet. Like आज तक भी मैंने check out नहीं किए. You just have to know what you have to work on. That's what I would say. So yeah, you will get in, right? Be confident, and keep learning. That's what I would say. Keep learning, work on some projects to develop your skills, and you will get in. I believe in you. Okay. भैया, how to get a job as data scientist? भाई apply कर, सीधी बात है. इसके लिए यार देख, जो ये questions होते हैं ना, how to get internship, how to get job, the only thing you have to do is apply. I can tell you कैसे. I mean, data science बहुत particular है. इसके लिए maybe I'll make a video या किसी interview में we'll bring a data scientist live with us. But let me tell you, अगर आपको कोई भी job चाहिए किसी भी field में, one of the options is check out their career section. ठीक है. Next option is LinkedIn or Angel.co. These are some of the websites जहाँ पे आप easily, you know, verified jobs के लिए apply कर सकते हो. Don't go on any other platforms. Like, this is what I always recommend. Number one is LinkedIn. Like, for me, LinkedIn has been the most important platform. Job चाहिए, internship चाहिए, LinkedIn is the best place. Though it's competitive because काफी लोग apply करते हैं through LinkedIn, but definitely if you are good, you will get selected. बाकी angel.co भी check out कर ले, उसमें भी काफी opportunities हैं. Next, आपने कौन से ईयर में GSoC में सिलेक्ट हुए थे? Dude, I participated in GSoC in 2019. एक तो जैसे इस साल का एडिशन चल रहा है, so मैंने लास्ट ईयर पार्टिसिपेट किया था 2019 में. How was your journey till now? How did you think about starting Verved? Did you face any difficulties, especially being in IPO? बिल्कुल यार, बिल्कुल. So journey अभी तक की तो यार सही रही है. I believe, you know, I am grateful for everything that's happened, all the awards, TEDx talk, like it. I'm really grateful for everyone that I've worked with, for everything that's turned out the way it did. And how did you think about starting with Verve? So Verve का मैंने पहले भी काफ़ी बार शेयर किया है, TEDx talk में भी शेयर किया है. So I did a lot of internships. I realized कि बाकी लोगों ने नहीं की. Then I thought कि यही इशू होता है, लक का फैक्टर आ जाता है फर्स्ट इंटर्नशिप में. So I had a lot of projects. I started a company. कि आ जाओ मेरी कंपनी में वर्क कर लो. If you're a fresher, you're welcome. So that was a starting point, and yeah, now we're currently working on Verved edProgram, if you know about that, right? Did you face any difficulties? Definitely, yeah, difficulties तो होती है, and I did face difficulties being in IPU. So I believe you're asking about college specific, like college or company balancing, college और बाकी की चीजें. तो यार, see, I never really, you know, too actively went to college. I mean, my last semester की attendance was what, like 2-4%, less than 5%. So that's that's about it. Like, if you're really doing something, just tell your you know, whatever, your professors, HOD, let them know कि you are doing stuff in your life, and show them the proof कि हाँ मैंने ये सब किया है, मैं ये सब कर रहा हूँ. You won't face any difficulties from college. Okay, you'll be able to balance things. आपने बोला कि नवंबर से कंट्रीब्यूट करना चालू करो प्रोजेक्ट्स पर, तो मतलब प्रीवियस प्रोजेक्ट्स ऑर्गेनाइजेशन
कि जो उनके गिटहब पर हैं. या दैट्स व्हाट आई मीन. जो मैंने बोला कि कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर, बिकॉज ये थोड़ा ना हर साल नए गिटहब रिपोजिटरी बनती हैं, वो तो गिटहब पे रहेंगी. लाइक इस ईयर भी अगर आपने वर्क करना है, आप अभी भी कर सकते हो. ऐसी कोई बात नहीं है कि आप GSoC नहीं हुआ तो ऑर्गेनाइजेशन के साथ वर्क ही नहीं कर सकते. जस्ट गो देयर एंड स्टार्ट सॉल्विंग इश्यूज. जस्ट मेक श्योर नो वन एल्स इज वर्किंग ऑन देम. ठीक है. सो आई होप दैट आंसर्स. आप गिटहब इंट्रो के लिए वीडियो बना सकते हो. यार मैंने आई बिलीव बनाई हुई है गिटहब पे. लेट मी थिंक अबाउट इट. आई गेस IOSD के चैनल पे या फिर ओके हाँ गिटहब पे मैंने नहीं बनाया. ओके आई मेक अ वीडियो ऑन गिटहब. ऑलराइट. I'll just note it down and I'll make a video on GitHub and Git. So yeah. Next. क्या पैसे देकर इंटर्नशिप करना चाहिए? On what planet do you do internships by giving money? I mean, I don't understand. Maybe you mean कि हाँ there are some companies which say कि it's a training, तो basically like 12,000 रुपए की ट्रेनिंग है and साथ में एंड में प्रोजेक्ट होगा, इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट दे देंगे. प्लीज डोंट डू दैट. प्लीज डोंट डू दैट. बहुत यूजलेस होती हैं. I've told so many times at so many places कि वो ट्रेनिंग वगैरह मत करो. A lot of times तुम्हारे कॉलेज में ही होंगी ट्रेनिंग्स, तो वो भी मत करो. बहुत फालतू में कुछ नहीं सीखोगे. सीख जाओगे बट वो काम का नहीं होगा एंड फालतू में मनी आपका वेस्ट होगा. ठीक है. नेक्स्ट इज भैया, डू वी हैव टू डू DS एंड एल्गो? डू वी हैव टू डू DS एंड एल्गो अलॉन्ग विद द प्रोजेक्ट मशीन लर्निंग? या DSL को तो आप किसी भी फील्ड में आपको करना है. ठीक है. आई ऑलवेज टेल दिस. जो भी आप, जैसे किसी का एंड्रॉइड का क्वेश्चन था, तो टू यू ऑल्सो DSL को तो साइड बाय साइड करना ही करना है. बिकॉज सी इंटरव्यूज में आपसे वही तो पूछेंगे DSL को रिलेटेड क्वेश्चंस कि इस ये आपका जो स्टेटमेंट है इसके लिए एक एल्गोरिथम लिखो एंड स्टफ लाइक दैट. तो यार इसलिए इट इज इंपॉर्टेंट DSL को स्टार्टिंग से करते रहो साइड बाय साइड, ताकि एंड में कोई इशू नहीं आए. आई हैव सीन स्टूडेंट्स लास्ट ईयर में प्लेसमेंट के टाइम लास्ट के 1-2 महीने में कोर्सेज करते हैं ये वो करते हैं कि DSL को आ जाए थोड़ा बहुत. सो मेक श्योर कि स्टार्टिंग से ही कर रहे हो, ताकि कोई ऐसा प्रेशर नहीं रहे एंड तक. ठीक है. आई होप दैट हेल्प्स. 1 घंटे ज़्यादा हो गया टाइम. ओके, नो प्रॉब्लम. Do we have to be an expert when we apply for an internship? How do you convince the employer that you want to learn while we're doing the internship? You don't have to be an expert. I've seen so many people जिनका यार FANG companies में हुआ है without any prior experience. You won't believe it. So it's not about being an expert, but definitely you have to know stuff, right? You have to know your stuff. Like companies को क्या benefit हो रहा है अगर आप as an intern काम कर रहे हो? Think about that. तो आप कुछ वैल्यू ला रहे हो उनकी कंपनी में, तभी तो आपको सेलेक्ट करेंगे, राइट? सो मेक श्योर यू नो स्टफ. ऑब्वियसली दे वोंट एक्सपेक्ट यू टू बी एन एक्सपर्ट. अगर एक्सपर्ट होते तो इंटर्नशिप थोड़ी ना ढूंढते, सीधा जॉब करते, राइट? दे नो दैट, तभी वो उसी के अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं इंटरव्यू में, उसी के अकॉर्डिंग दे एक्सपेक्ट द वर्क. ओके. हाउ टू कन्वे द एम्प्लॉय दैट वी वांट टू लर्न? यार देख, एम्प्लॉयर को अगर कन्वे करना है ना कि आप जो भी इंटर्नशिप के लिए पैशनेट और इंटरेस्टेड हो, तो मेक श्योर कि आप उसके लिए उस फील्ड में प्रोजेक्ट्स वगैरह कर सको. दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट्स. सम स्किल्स रेज्यूमे में डाल दी, बट उसका प्रूफ क्या है? द प्रोजेक्ट्स इज द प्रूफ कि मैंने ये चीजें इंप्लीमेंट की हैं, देख लो. सो दे विल सी कि हाँ इस बंदे ने 10 प्रोजेक्ट कर लिए लेट्स से एंड्रॉइड के, तो ही इज रियली गुड, ही नोज हिज स्टफ. तब आपका इंटरव्यू लेगा वो, राइट? दे विल टॉक अबाउट योर प्रोजेक्ट एंड देन यू विल गेट सेलेक्टेड if you can convey those things right. And this is why communication skills are important. I did a webinar on how to develop a strong profile in tech. तो इसीलिए यार जो आपकी communication है ये भी बहुत ज़्यादा important होती है, because until and unless you cannot convey what you know, अगले बंदे को फर्क ही नहीं पड़ेगा ना उस चीज़ से. So make sure you're able to tell to speak about whatever field you're into. Also, there is 100 Days of Sweat by Paul Hudson. Yeah, man. Check that out for iOS guys, right? Yeah, for iOS guys, check that out. Is it possible to learn Swift language without Mac and iPhone? Yes, you can learn Swift language without Mac and iPhone. Online compiler होते हैं, but अगर आपने iOS development करनी है, you do need a MacBook. ठीक है, Mac आपको चाहिए ही चाहिए if you want to do iOS development. And then if you want to submit apps to the App Store, खुद के ऐप बनाने हैं मार्केट में, तो उसके लिए आपको iPhone चाहिए. I mean, it's just what it is. All right. How to start machine learning, which courses to refer? तो यार machine learning में कैसे start करना है, इसके लिए see I'm not in machine learning field, but
I have talked to machine learning people, so let me guide you. इसके लिए, see, to begin with, one, your there's this course by Andrew. It's on Coursera, right? You can find it on Stanford online classes also. There's this course by Andrew, so check that out. Even though the guy uses Octave instead of Python, but still it's really good. Check that out. And then there's Applied AI website. Check that website out. Okay, and then obviously there's Kaggle. Like Kaggle is like the holy place that you should hang out at if you're a machine learning engineer. Next is React versus Angular versus. Please don't ask me this question. I'm not in web development and I won't guide you wrong. But whatever you're doing, and React, do React. I would advise you to do React, but don't do React Native. उस पे वीडियो बनाऊंगा कुछ दिन में. But if you want to do React Native, that's fine. Just don't do Flutter, please. ओके, पाथ फॉर वेब डेवलपमेंट. तो यार इन स्पेसिफिक, अगर आप चलो इन स्पेसिफिक फील्ड्स की बात कर रहे हो, तो इसी के लिए मैं कह रहा हूँ प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल. एंड हर संडे को ना हम इंटरव्यू करते हैं डिफरेंट डिफरेंट लोगों का. लाइक फर्स्ट इंटरव्यू वी डिड सोनम सिंह. वी इंटरव्यूड सोनम सिंह. शी इज Zillow UX intern at Zillow. Okay, so she talked about user research, user experience, and stuff like that. And then last week we interviewed Ananay. Ananay is software engineering intern at Apple. तो उसने बातें की थी web development, cyber security, and things like that. And then tomorrow we're going to have Anjali. She's software engineering intern at Facebook. तो सी, अगर आपको ये सब पता करना है कि स्पेसिफिक फील्ड के लिए क्या बात है, तो वो इंटरव्यूज अटेंड करो. उनमें हम यही पूछते हैं उनसे कैसे शुरू किया, क्या उनकी पूरी जर्नी रही, देन क्या पाथ होना चाहिए किसी बिगिनर का. एंड में क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो आप उनसे. तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट नोटिफाइड. एंड ऑल्सो प्लीज डू अटेंड दोज इंटरव्यूज. लाइक उनके क्वेश्चन एंड Q&A के टाइम में यू कैन आस्क द क्वेश्चंस डायरेक्टली टू द एक्सपर्ट्स. Like I know about everything, right? But those are the experts in their particular fields. तो अगर आपने किसी specific field के बारे में जानना है, then make sure you attend those interviews. I'm telling it again and again because it's so valuable. You don't want to miss it. Next, you don't need Mac to learn Swift, but you need one to implement it. Yeah, true. Thanks, Piyush. How did you start with iOS development? Yeah, इसकी हम बात कर चुके हैं, थोड़ी देर पहले की थी. ठीक है, तो अगर if you missed it, then please wait for the webinar to end. Then just go back to, I guess, 1 hour 10 minutes timestamp, and उसके अराउंड हमने बात की थी. Alright, thank you so much. Thank you for asking the great question bro. Okay, Iron Man, question क्या है? जो GSoC के ऑर्गेनाइजेशन में जो मेंटोर होता है उनसे कैसे बात करें रिगार्डिंग आवर प्रपोजल. यार पहली चीज, हाँ, दिस इज आई फॉरगॉट गाइस, एवरीवन लिसन अप. कभी भी अपने मेंटोर को ना डायरेक्ट मैसेज मत भेजना, ठीक है? पर्सनल उस पे स्पेस पे पर्सनल चैट पे मैसेज मत भेजना, लिंक्डइन पे मैसेज मत भेजना. इट्स ओपन सोर्स, इज मेंट टू बी पब्लिक. ठीक है, ऑब्वियसली अगर कुछ ऐसा है जो यू कैन नॉट टॉक अबाउट पब्लिकली, देन यू कैन हिट अप योर मेंटोर्स पर्सनली, ठीक है? बट वरना अपने जो ओपन चैट प्लेटफॉर्म है वहीं पे बात करो. तो अगर प्रपोजल की बात करनी है, ये भी वहीं पे करो. Just ask your mentor ki these are some ideas and I'm writing my proposal. I need your insight. I need your help. Simple as that. Just ask your mentor and they will help you. Okay. Next question. Wait, what have we talked about? Let me see. Okay, I believe काफी सारे question answer हो गए. Shubham, I haven't done any internship. यार मस्त English लिखते हो तुम लोग. I haven't done any internships till now, so what can I put in my experience section? यार experience section में फिर ये लिख दे member at this organization. Like कोई organization होगी जिसका तू part होगा, कोई society होगी, वही डाल दे तू. I mean, that's what I would say. But see, if you don't have any experience, then this is what you can put, right? कि मैंने इसमें काम किया. And I did say this in my resume video. If your resume is empty, add the projects. Like if you're looking for an internship, वो किसी फील्ड में होगी. अगर किसी फील्ड में होगी तो उस फील्ड में आपने कुछ चीजें सीखी होंगी. तो उन पे कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए होंगे. तो उन प्रोजेक्ट्स को अपने रेज्यूमे में डाल दो. I mean मेंशन कर दो, like this was the project and this is the little description about the project. ठीक है.
What is your opinion on Flutter? यार I said Flutter की बात मत करो इस पे, I'll make a video. मैं भी कुछ नहीं बोलूँगा इस पे, but in one line, it can never ever place native platform, Android or iOS. Flutter is just, let me tell you, Flutter is just a quick way to get your product, get your app in the market, to the market. Okay. It's not gonna place Android iOS. ये line मैंने अपने webinar में बोली थी 2 साल पहले iOS वाले webinar में. Native is called native for a reason. ठीक है, ये मत सोचो फ्लटर या और कोई ऐसा फ्रेमवर्क आके रिप्लेस कर देगा. इट डजंट हैपन. Okay, that's what I would say. But Baki, wait for my video on Flutter. I will make one. Right, I will make one. And any other questions? Okay, let me see. How can I improve my Android development skills for GSoC? I'm in first year. Dude, I just said कि upskilled. मैंने Android का आंसर किया था. I hope you were there. Develop your skills. 3 months. Develop a project. After 3 months, look for your first internship. Look for your second internship. And then around January, December, start contributing to GSoC. How do you improve your development skills? Is by improving it, by working on it. If you don't know cycling, how do you get good at cycling? By actually doing it, right? How do you get good at anything? By actually doing it more often. So please work on it, and हो जाएगा. Easy है, tension मत लो. Next is, I'm a Rajat. I'm a MERN developer. आपके opinion में which skills are important for me to participate in GSoC? यार इसके लिए again I would say just go to GSoC website and उसमें देख लो, हर एक project को देखो. Like I will tell you कि मैं कुछ भी बोल दूंगा, it might not be true. So best would be to see for yourself. ठीक है, GSoC website पे जाओ, organizations पे जाओ and see वहाँ पे technologies कौन सी use कर रहे हैं. And जो भी सबसे ज़्यादा use हो रही है, maybe you can focus on that technology, on that particular technology. ठीक है. Next. काफी टाइम हो गया यार, 1.5 hour होने वाला है. Bro, there are specific organizations for programming language like Swift or Dart, but projects are a bit confusing. Should we apply for programming? Bro, there are projects are a bit confusing. Apply तो करना है यार, अगर तुम्हें GSoC करना है तो apply करना पड़ेगा. There are हाँ, let me tell you कि Swift organization जैसे part लेती है GSoC में, they hardly select anyone. वो एक organization जो किसी को नहीं लेती, because the project Swift का जो project है, it's open source and it's really tough. ठीक है, but yeah, if you're interested, then go ahead and apply. Like if it's confusing, take it slow. As I said, module wise कर लो and हो जाएगा. ठीक है. All right. Can I work in your company? I'm a fresher. यार अगर तुम्हें work करना है ना, see we are working on Verved edProgram. ठीक है, अभी इस पे work कर रहे हैं. Then just hit me up on Instagram or LinkedIn, wherever. I'll tell you where to send your where to send an email. Okay. Just send an email, or let me tell you right now, send an email to hello@verve.in and we'll hit you up. We'll get back to you. Okay, send a mail, tell us about you, tell us about the skills you have, tell us about what things you can work on or what you want to learn. Okay, a video request, how to start your own startup and take it to new levels. कैसे, ठीक है यार, अच्छा वीडियो रिक्वेस्ट है. हाँ सर, इस पे वीडियो बना दूंगा, स्टार्टअप वगैरह कैसे स्टार्ट करनी है एंड कैसे ग्रो करना है. I'll make a video on that. Okay, guys, if you have any suggestions for YouTube videos, then please tell me. अगर कुछ भी सजेशन है, then अभी बता दो, I'll note them down. Like एक तो I believe पहले किसी ने कुछ सजेशन दी थी, it was about Flutter. Yeah, तो Flutter पे I'll make a video on startup. ठीक है, इन सब पे I will make a video. So yeah, if you do have any requests, please comment कर दो and I'll note it down. I'll make a video as soon as I can. Bro, will you use your Google referral in future? Yeah, I mean, I don't really need the Google referral because in the near future, I'm not really thinking on applying for any position at Google. But let's see कब क्या होता है. Not too sure, but like at one point you will really get in if you have the experience. Like in Google, I know so many people. So since I've done GSoC, I'm one of the 6 Google Venkat scholars. So it will be very easy for me to get to the interview. But yeah, it's that's it. I haven't done an internship. Yeah, so we've talked about it, man. You've done some courses. Put that as training. I mean, you can. Well, actually, you have to put that in courses section, in curriculum section. But if you have made projects, add those projects to your resume. Shubham.
2 मिनट पहले भी मैंने आंसर किया था, जस्ट ऐड दोज प्रोजेक्ट्स टू योर रिज्यूमे, ठीक है. दैट्स प्रीटी मच इट मैन, आई गेस हो गया है, काफ़ी टाइम हो गया है, 6 मिनट्स मोर फिर ख़त्म करते हैं वेबिनार. और इसकी बात कर चुके हैं, एंड्रॉयड की बात कर चुके हैं. वेन टू अप्लाई फॉर फर्स्ट इंटर्नशिप, यार अप्लाई कर दो जैसे ही आप थोड़ा बहुत स्टार्ट कर चुके हैं ना कोई भी एक चीज़ सीखना. लाइक एंड्रॉयड स्टार्ट कर दिया आपने, तो आप 1 महीना 2 महीना एंड्रॉयड कर लो. अगर आपने थोड़े बहुत प्रोजेक्ट्स बना लिए हैं 2-3 महीने, एंड आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस है कि ओके नाउ आई कैन रियली लुक एट अ कोड एंड अंडरस्टैंड इट, एट दैट टाइम अप्लाई फॉर फर्स्ट इंटर्नशिप. ठीक है. हाउ मेनी इंटर्नशिप शुड बी डू इन 4 years? यार जितनी करो उतना अच्छा है तुम्हारे लिए. लाइक आई बिलीव मैंने अपने फर्स्ट 2 years में 10 to 15 इंटर्नशिप कर ली थी. ठीक है, आई वॉज रियली क्रेजी जस्ट डूइंग थिंग्स आफ्टर थिंग्स, सेइंग येस टू एवरी अपॉर्चुनिटी. बट ये अगर आप वैसे बात करो कॉलेज के उससे, तो आई बिलीव कॉलेज कहते हैं 3 इंटर्नशिप कर लो, राइट. बट आई वुड से जितनी कर पाओ उतनी करो, जितनी आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है उतनी इंटर्नशिप्स कर लो. बिकॉज सी, जितनी आप इंटर्नशिप करोगे इट्स लाइक अ लैडर. ठीक है, पहली इंटर्नशिप मिली, देन नेक्स्ट इंटर्नशिप उससे बढ़िया मिलेगी आपको. 2-3 इंटर्नशिप कर ली, देन यू कैन इजीली अप्लाई टू फैंग कंपनीज, राइट. वहां इंटर्नशिप कर ली तब तो आपको कहीं भी इंटर्नशिप मिल जाएगी, नो प्रॉब्लम. ओके, हाउ डू यू अंडरस्टैंड. इसके बारे में बात कर चुके हैं यार. यू ब्रेक देम डाउन मॉड्यूल वाइज करो, इसके बारे में बात कर चुके हैं. नेक्स्ट इज, आर वी सपोज टू सजेस्ट न्यू आइडियाज इन जी. हाँ, यू कैन सजेस्ट न्यू आइडियाज. अगर आपको एग्जिस्टिंग आइडियाज के अलग कुछ प्रपोज करना है, जस्ट टॉक टू योर मेंटोर. ठीक है, जीसॉक से पहले अपने मेंटोर से बातें कर लो कि हाय आई एम प्लानिंग ऑन I'm planning on this particular project. I have this idea. So if the mentor likes you, they will tell you. So if you do have a new idea, अगर वो उसकी but before I propose to your mentor, maybe organization का कोई plan नहीं है वो करने का, then your proposal will go waste. ठीक है. So please make a video on GitHub for beginners. Okay, I'll make the video on GitHub. Let me just give me one second. I'll note it down. Yeah, wait, I note it down. Yeah, I'll note it down. बारे कमेंट कर दो क्या क्या वीडियो बनानी है. एक फ्लटर की बनानी है, एक गिटहब की बनानी है, एक स्टार्टअप की बनानी है. डू हैव अ बिग लिस्ट ऑफ वीडियोस मैन जो मैं सोच रहा हूँ बनाने का. बट इफ यू हैव एनी सजेशंस जस्ट कमेंट इट. कोई भी सजेशन है कमेंट कर दो. एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल. बहुत सारी वीडियोस डालने वाला हूँ इन दी अपकमिंग फ्यू वीक्स. प्लस कल इंटरव्यू है गाइज. अगर अभी जो भी लोग यहाँ पे हैं, कल इंटरव्यू है 8 बजे शाम को, फेसबुक इंटर्न का. बहुत सही होने वाला है. तो मेक श्योर कि आप कल अटेंड करो. Right, make sure you're here tomorrow at 8 p.m. And do follow me on Instagram at iSwiftShake for some really cool content and to stay up to date with everything that I do. Any other comments? I'll make a video on GitHub. Question, GSoC के लिए contribution करना है, but contribution OS में करना उस organization में करना है क्या जिस organization में हम apply कर रहे हैं? हाँ ऑब्वियसली यार, और किस में करेगा. आई मीन जिस ऑर्गेनाइजेशन में, सी स्टार्ट विद 2-3 ऑर्गेनाइजेशंस इन योर फील्ड, एंड तीनों में थोड़ा बहुत करो कंट्रीब्यूशन करना. देन यू विल फील लाइक कि एक में मजा नहीं आ रहा, ड्रॉप दैट, उसको ड्रॉप करो. बाकी जिन ऑर्गेनाइजेशन आपको लग रहा है कि हाँ यार दिस इज सम रियली कूल प्रोजेक्ट, उसमें कंट्रीब्यूट करते. ओके, दैट्स माय सजेशन. Bro, which organization are like Swift, as you said? So I just gave the example of Swift. Few organization like बहुत थोड़ा tough सा है, but there are some organization में comparatively थोड़ा tough रहता है. Don't worry. फालतू में तुम अपने आप के ऊपर प्रेशर डाल रहे हो. See, all organizations are easy to get in. देख हर साल स्टूडेंट सेलेक्ट हो रहे हैं ना, that means you can too. तू भी सेलेक्ट हो सकता है. तो don't really think tough होगा, easy होगा. I said it before. It's gonna be easy. Focus on your skills. Believe in yourself. एंड अप्लाई कर दे. ठीक है. जीसॉक के लिए गिटहब पे कंट्रीब्यूशन करना फॉर द पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जिसमें, हाँ ओके भी बात की है ब्रो. एंड एनी अदर क्वेश्चंस? चलो यार, तो 1 hour 30 minutes होने वाले हैं. इट वाज अ ग्रेट सेशन. थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग. आई होप कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी जीसॉक के बारे में. हम सारी चीज़ों की बात की है, प्रपोजल, ऑर्गेनाइजेशन एंड एवरीथिंग. और फिर भी अगर कुछ बच गया है तो फील फ्री टू हिट अप ऑन इंस्टाग्राम. आई विल हेल्प यू. ठीक है. Instagram, send me a DM at iSwiftShake and I'll answer any question that you have. कितने प्रपोजल अप्लाई कर सकते हैं? आई बिलीव 3 प्रपोजल, मैक्सिमम 3 प्रपोजल सबमिट कर सकते हो आप जीसॉक में. ठीक है,
3 प्रपोजल सबमिट करते हो, बट यू शुड, आई वुड एडवाइस कि 2 या 1 पे ही फोकस करो. आई मीन एक थोड़ा रिस्की हो जाता है, आई टू रिस्क, बट 2 में फोकस करके अप्लाई कर दो, दैट्स फाइन. बिकॉज फिर ये होता है 3 या मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप फोकस कर रहे हो तो एक में भी अच्छे से कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाएंगे. ये प्रॉब्लम भी होती, ये प्रॉब्लम भी होती है बच्चों की, लाइक दे फोकस टू मच ऑन डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड देन उनका हो ही नहीं पाता बस किसी में. So that's it, guys. Thank you for attending. I hope that helps. Bye, bye, bro. Bye. Thank you so much for this great session. Thank you, bro. If you do have any other questions, hit me up on Instagram. I hope you got some insights from today's webinar. I hope it was worth attending. And guys, tomorrow interview, kal interview hai, wo attend kar lena. Again, subscribe to the channel, hit the bell icon so you get the notifications. Right? Don't forget to drop a like if you liked the video. And that's it, guys. All right. Thank you so much, peeps. I'll see you tomorrow at 8 p.m. ठीक है, कल 8 p.m. पे बात करते हैं. Until then, take care and keep working on your skills and good luck. All right. Thank you for attending, guys.